recognized as the first ruler of the Somavanshi Dynasty in Kosala, Odisha. Hello officers, welcome to your favorite channel Target OPSC. लास्ट वीडियो रे आमे भौमखारा डायनेस्टीज को फुल्ली कंप्लीट करथिले थ्रू MCQ. एई लेक्चर रे एई वीडियो रे आमे सोमवंशी डायनेस्टी को कवर करबा थ्रू MCQ. तो स्टार्ट करबा हम वीडियो बिना किछि देरी रे आ सॉल्व करबा एकाठी MCQ. चलो तो आमे कौन करचे सोमवंशी डायनेस्टीज को आमे चार्टा पार्ट रे डिवाइड कर देचे आ सेही थ्रू आमे MCQ देखिबा. तो फर्स्ट पार्ट रे ओरिजिन एंड अर्ली कंसोलिडेशन ने आमे क्वेश्चंस देखिबा 8 रु 1 रु 8 है. तापरे एक्ट 2 रे द जेनिथ ऑफ इम्पर्शियल पावर क्वेश्चन देखिबा 9 to 16. तापरे कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल जोटा गोल्डन एज कहले सेथिरो क्वेश्चंस देखिबा 17 to 24. एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लाइन एंड फॉल सेथिरे मध्ये क्वेश्चन देखिबा 25 to 32 क्वेश्चन. ओके तो स्टार्ट करबा विदाउट एनी काइंड ऑफ देरी. तो फर्स्ट अच्छी फॉर्जिंग अ किंगडम इन साउथ कोसला. ओके तो क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द सोमवंशी डायनेस्टी ऑफ साउथ कोसला? सो त्रिभुवरदेव, उदयन, बलार्जुन, शिवगुप्त, फास्ट जन्मेजय फर्स्ट. तो सो द आंसर इज उदयन. तार हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट होची कि साउथ कोसला कोटा को कहा जाउची एबे जोटा को मॉडर्न रायपुर, बिलासपुर एंड संबलपुर कलाहांडी, जोटा कि 7th 8th सेंचुरी विथ सिरीपुर तार कैपिटल थिला सिरीपुर. ओके आउ जगह होची रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर कलाहांडी. ओके क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अल्टरनेटिव डायनेस्टिक नेम is the Somavanshi dynasty also known by in early historical records? Okay, Panduvanshis, Mahamegavahanas, Shailadvavas, Mathras. So answer is Panduvanshis. Okay, the first जन्मेजय जे कि बिल्डर थिले सोमवंशी in Odisha. Somavanshi power in Odisha was a direct descendant of the Panduvanshis of South Kosala. Okay, the South Kosala Panduvanshis. The dynasty Somavanshi dynasty को कौन कहा जाउतला? Panduvanshis कहा जाउतला. Okay, the third question, pressure from the west. Question number 3, where was the early capital of the Somavanshis of South Kosala located before their eastward expansion? Subarnpur, Binitapur, Siripur, Jajati Nagar. So the answer is Siripur. Historical context देखिनबा. Siripur, situated in the modern Raipur district, served as their early stronghold until regional pressures forced an eastward migration. Okay, so एठी आमे देखिनबा कि सिरीपुरटा थिला कोठी? सिरीपुरटा हमर रायपुर रे थिला. ओके सेही टाइम रे सिरीपुर रायपुर रे थिला. So next question is, which Rashtrakuta king invaded the Somavanshis kingdom at the dawn of the 9th century, temporarily placing them under Rashtrakuta hegemony? Okay, so the options are Danti Durga, Krishna, third Krishna 3, Amoghavasa, Govinda third Govinda. Okay, so the answer is third Govinda. Historian context देखिदबा तार. The Somavanshis remained under Rashtrakuta hegemony until Govinda III's death in 1814 AD, after which they faced threats from the Kalachuris of Ratnapur. Okay, the answer होची Govinda 3. Somavanshi remained under Rashtrakuta hegemony until third Govinda's death. तो तांको डेथ जाए एमाने हेजिमनी रो अंडर रे थिले सोमवंशीस. ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिदबा. फर्स्ट जन्मेजय एंड द ईस्टवर्ड एक्सपेंशन. So the question number 5 is, who is recognized as the first ruler of the Somavanshi dynasty in Kosala, Odisha? So first Janmejaya Mahavagupta. Sorry. So first option is first Janmejaya Mahavagupta, first Jajati, Bhimaratha, Tivara Deva.
So the answer is first Janmejaya Mahabhagagupta. तार historical context देखिदेबा. Driven away from Dakshina Kosala, he established his capital at Subarnapur, modern Sonpur, and consolidated the empire. So से तांको capital सुबर्णपुर जोटा कि modern सोनपुर रे consolidate करतले तांको empire. Okay. Next question. First Janmejaya inflicted a crushing defeat on Ranabhanjadeva to annex which specific territory? So the options are Kangoda Mandala, Kinjali Mandala, Sevataka Mandala, Tosali. So the answer is Kinjali Mandala. So historical context देखिदबा. The annexion of the Bodh Fulbani एरिया किंजली मंडल. तो आम जो किंजली मंडल देखुचे एटा कोठी अछि बौद्ध फुलबाणी. ओके कोठी एटा बौद्ध फुलबाणी रे अछि एरिया किंजली मंडल. पेव्ड द वे फॉर द अल्टीमेट कन्क्वेस्ट ऑफ द भौमकार किंगडम. ओके तो आमर एतिकी मन रखियार अछि कि किंजली मंडलटा एबे जोटा कि बौद्ध फुलबाणी एरिया रे अछि. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा बिना देरी रे. The titles and triumphs of the first conqueror. The question number 7. Which two alternative regional titles were used alternately by the Somavanshi rulers of Odisha? Okay, so the options are Parama Saugata and Parama Tathagata. Option number B Mahabhagupta, Mahasivagupta. Option number C Trikala Lingadhipati and Gajapati. Ranabhita and Singhbhita. Okay, Sainyavita. Okay, so the answer is Mahabhagupta, Mahasivagupta. तार historian context देखिनबा. This alternating title system strongly links first Janmejaya to his predecessors Sivagupta and the early South Kosala lineage. Okay, the first Janmejaya को तांका predecessor शिवगुप्त and the early South Kosala lineage सहित एटा strongly link करे. Okay, then next question. According to the records of latter king first Janmejaya drew to himself the fortune of the king of which region by killing him with a kunta spear in battle? The options are Kalinga, Gauda, Odra, Dahala. So the answer is Odra. Historian context तार होची this victory over the king of Odra was a critical step in placing his daughter Prithvi Mahadevi on the Bhauma throne. Okay, एठी हमें मन रखिबा कि पृथ्वी महादेवी को से भौम थ्रोन ने बसेबा पई ओड्रा कौन थिला ना दिस विक्ट्री ओवर द किंग ऑफ ओड्रा से जो ओड्रा पर विक्ट्री पाई थिले वाज ए क्रिटिकल स्टेप इन प्लेसिंग एटा क्रिटिकल स्टेप बने देथिला तांको डॉक्टर को से पृथ्वी महादेवी को भौम थ्रोन ने बसाय पे गोटे क्रिटिकल क्राइसिस बॉन्ड माने ये कर देथिला. ओके बर्थ करथिला. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो ये आम द ऑरिजिन ऑफ से सोमवंशी डायनेस्टी ये सर जाइए 8 नंबर क्वेश्चन सहित. तो आम नेक्स्ट को जीवा द जेनिथ ऑफ इम्पर्शियल पावर. तो यहाँ सहित आमर सेकेंड पार्ट स्टार्ट होची सोमवंशी डायनेस्टी सेकेंड पार्ट रे आम कौन रखी थिले फर्स्ट पार्ट ये आमर सरी जाइए जोटा कि ऑरिजिन ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी थिला. एटा होची सेकेंड पार्ट जो अच्छे आमर द जेनिथ ऑफ इम्पर्शियल पावर. तो स्टार्ट करिबा बिना किछि देरी रे. So the question number 9 is soon after his accession where did first Jajati shift his capital from Subarnapur? So the answer the options are Guhadeva Pataka, Binitapura, Binka, Kalinganagara, Dantapura. So the answer is Binitapura, Binka. So historical context देखिनबा. Shifting the capital Binitapura on the bank of Mahanadi. Okay, तो Binitapura टा कोठी थिला कि महानदी रे थिला. Bank of Mahanadi was a strategic move for better administration and military positioning. Okay, so the एटा मन रखियार अछि कि बिनीतपुरा थिला बैंक ऑफ द महानदी थिला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ फर्स्ट जजाति इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन?
So the options are the defeat of the Cholos, the annexation of the Bhauma kingdom to Sali, the conquest of Bengal, the capture of Varnangal. So answer is the annexation of the Bhauma kingdom to Sali. तर historians context देखि नबा, he likely occupied the Bhauma kingdom by eliminating Dharma Mahadevi, firmly unifying Kosala and Tosali under one banner. Okay, he likely occupied the Bhauma kingdom. से Bhauma kingdom को occupy करथिले eliminate करिकी धर्म महादेवी. ओके, सो से धर्म महादेवी को eliminate करिकी भौम किंगडम को जीति नहीं, विक्ट्री हो जाता भौम किंगडम उपर, फॉर्मिंग यूनिटाइंग कोसला एंड तोसाली अंडर वन बैनर. से डिफीट करिकी धर्म महादेवी को कोसला और तोसाली को यूनाइट कर देथिले, यूनिटिंग करथिले गोटे बैनर अंडर रे. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. क्वेश्चन नंबर 11, गवर्नर्स usurpers and the Chola threat. Okay, so the question is, who was appointed as the governor of Kalinga by King Dharmaratha? So the options are Nahusa, Abhimanyu, Indraratha, Udyota Kesari. Okay, so the answer is Indraratha. Historian context होची, Indraratha's ambition led him to usurp the throne after killing Nahusa and Abhimanyu, making him a controversial figure not listed in official Somavanshis character. आमको बस मन रखिबार अछि कि इंद्ररथ थिले जहाँ को कि गवर्नर ऑफ कलिंग बाय किंग धर्मरथ जहाँ को अपॉइंट करिथिले किंग कलिंगर गवर्नर भावे किंग धर्मरथ तांको अपॉइंट करथिले इंद्ररथ को. ओके, एतिकी मन रखार अछि. क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच पावरफुल सदन किंग डिफीटेड एंड किल्ड इंद्ररथ एट जजाति नगर, क्रिएटिंग अ टेम्पररी पावर वैक्यूम? तो फर्स्ट राजराज, सेकेंड ऑप्शन राजेंद्र चोल, कुलोत्तुंग चोल, गणपति. द आंसर इज राजेंद्र चोल. तार हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट होची, राजेंद्र चोल's invasion brought devastation of जजाति नगर, forcing the Somavanshi ministers into a crisis of succession. तो बेसी किसी ना आमको एतिक मन रखार अच्छे कि व्हिच पावरफुल सदन किंग को पावरफुल सदन किंग डिफीटेड एंड किल्ड इंद्ररथ एंड जजाति नगर को विक्ट्री करथिले आ इंद्ररथ को किल्ड करथिले आ गोटे टेम्पररी पावर वैक्यूम क्रिएट करथिले से होचंदी राजेंद्र चोल. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. द ग्रेट रिस्टोरेशन अंडर the second Jajati. So question number 13, following the death of Indraratha and the resulting anarchy, who was declared the king of Kosala by the ministers? First option देखि नबा, पूर्णजय, सेकेंड जन्मजय, चंदीहार जजाति, सेकेंड जजाति, चंदीहार सेकेंड जजाति, कर्णदेव. Okay, so the answer is चंडीहार जजाति, चंडीहार सेकेंड जजाति. तार हिस्टोरियन कंटेक्स्ट होची, he was the son of अभिमन्यु and grandson of विचित्रवीर. तो से किए चंडीहार सेकेंड जजाति होचंदी अभिमन्युंकर पुओ आउ विचित्रवीरंकर नाती. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14, which Somavanshi king is historically credited with firmly unifying Utkala and Kosala under one political umbrella? केउ सोमवंशी राजा historically credited with firmly unifying उत्कला और कोसला को गोटे अम्ब्रेला अंडर को पॉलिटिकल अम्ब्रेला अंडर को आनिथिले. सो द ऑप्शंस आर फर्स्ट जन्मजय, धर्मरथ, सेकेंड जजाति, भीमरथ. तो आंसर इज सेकेंड जजाति. तार हिस्टोरियन कंटेक्स्ट होची, his vast empire extended from the Bay of Bengal to Sambalpur and from
Dandaka Bhukti to Ganjam, okay, to Sambalpur, and from Dandaka Bhukti to Ganjam, making the true territorial zenith of the dynasty. आमको एतिकी मन रखार अच्छी कि बे ऑफ बेंगल संबलपुर को आसते एक्सटेंड करते एम्पायर भास्ट एम्पायर को एक्सटेंड करते बे ऑफ बेंगल रु संबलपुर दंडका भुक्ति रु गंजाम है तो ये मन रखार अच्छे कि बेंगल टू संबलपुर आउ दंडक भुक्ति रु गंजाम से एक्सटेंड करते सेकेंड जजाति जो एम्पायर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा क्वेश्चन नंबर 15 the impartial mandate faith and stone. So the questioner, according to tradition, how many Brahmins did second jajati invite Kanya Kubja Kanauja to perform the Dasama Veda. So the question number 15, according to tradition, how many Brahmins did second jajati invite from Kanya Kubja to perform the Dasavamedha sacrificed at Jaspur? Dasavamedha sacrificed at Jaspur. Okay, the options are 1,000, 5,000, 10,000 and 1 lakh. So the answer is 10,000. तारा historian context देखिए, this mass invitation as a massive landmark in Brahmanical revival of Odisha, the memory of which survives in modern Odia rituals. तो ये गोटे historical landmark थिला जोटा कि एते मात्रार ब्राह्मण्स मानक इनवाइट करा जाइतिला. ओके, so the question number 16, the construction of the Gynaitic Lingaraj temple at Bhubaneswar was started by second Jajati and completed by which ruler? The options are Udyokta Kesari, Karnadeva, second Janmajaya, Purnajaya. So the answer is Udyokta Kesari. तार historian context देखिदबा. Udyokta Kesari was a worthy successor who successfully defended the empire from Gauda. से empire को काटू ये करथिले गौड़ कलाचुरी attacks while completing his father's architectural masterpiece. तांकर architectural masterpiece रे भी योगदान रहितिला और से empire को भलसे protect भी करथिले from गौड़ा and कलाचुरी. ओके, सो एठी वीडियो लेक्चर को आम ये शेष करवा आ देखा नेक्स्ट पार्ट ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी थ्रू दिस लेक्चर and thank you so much and all the best for your upcoming prelims exam.